it is 100% ethyl alcohol. Absolute alcohol, absolute alcohol. तो एब्सोल्यूट से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है. इट इज 100% इथाइल अल्कोहल. नो वाटर इज मिक्स्ड इन इट. राइट ऑन. एंड इज फ्री फ्रॉम वाटर. एंड इज फ्री फ्रॉम वाटर. सब लोग लिख रहे हैं. जरा अपना वीडियो ऑन करिए. स्विच ऑन योर वीडियोज. साक्षी, आर्यन इज राइटिंग. अभिजीत, साक्षी, वीडियो ऑन करो बेटा, दिखाओ. आर यू राइटिंग और नॉट? एवरीबडी इज राइटिंग. ओके 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 देन ठीक है. सब लोग लिखते रहो, ये नहीं कि बैठे रहेंगे आइडल. सो absolute alcohol means 100% ethanol and nothing is mixed into it. No any unwanted substance or even water is not mixed in it. It is 100% alcohol. Nothing else is mixed into it. Next लिखो rectified. Rectified spirit. Rectified क्या है? Next है थर्ड है rectified spirit. So this was 100% C2H5OH. Okay, this was 100% C2H5OH. Rectified spirit is 95% C2H5OH. So rectified spirit, it contains 95% of alcohol. It contains 95% of alcohol and rest is water. The 5% is water and 95% is ethanol. नेक्स्ट लिखो पावर अल्कोहल. पावर फोर्थ क्या होगा? पावर अल्कोहल. It is a mixture of absolute alcohol. It is a mixture of absolute alcohol, and petrol. Absolute alcohol and petrol in the ratio of 20 is to 80. 20 is to 80. तो 20 क्या हो जाएगा? 20 will be absolute alcohol, and this will be what? This will be petrol, and this is used to generate power. And is used to generate what? Power. It's called power alcohol. सबको समझ में आ गया है ये क्लास? 4 different types of alcohol. Commercial form. All these are what? All these are different forms. What क्या है ये? Commercial form है. These are what? Commercial form of alcohol. Absolute alcohol 100%, rectified alcohol 95%, power alcohol 20 is to 80%, and denatured alcohol proportion is not written. Proportion I have given you proportion or not? 5 is to 10 दिए थे ना? Hello class? Hello? Yes ma'am. Proportion I have given you 5 is to 10%. Unwanted substance is mixed into it. ठीक है? Is it okay everybody?
Nobody, please respond me now. Please, you try to respond me. How will I get to know? May I erase this thing? Yes, ma'am. So 4 different types of alcohol is there. जो क्वेश्चन आता है आपका वो कहां से आता है? डीनेचर्ड से आता है, ठीक है। डीनेचर्ड, एब्सोल्यूट को याद कैसे रखोगे? एब्सोल्यूट मींस 100% करेक्ट, तो 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% इथेनॉल इज देयर। रेक्टिफाइड तो 95% है। पावर अल्कोहल तो रेशियो में क्या प्रेजेंट है? 20:80, जहां पे 80 जो है वो पेट्रोल है, और पेट्रोल इज अ फ्यूल। पेट्रोल है क्या? पेट्रोल इज अ फ्यूल, सो इट इज यूज्ड एज व्हाट? पावर जनरेटर। It is used to produce what? Power, fuel. Okay, ठीक है क्लास। Now next, जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज कल पढ़े थे ना? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, बताओ। Let us recapitulate. What properties we have done in chemical properties? Anyone? What were the different properties? Nobody is going to say. First was combustion. ठीक है, combustion होता है ना इथेनॉल का? होता है या नहीं होता है, बताइए। Is there combustion of ethanol? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Plus O2 will give you what? You will get CO2 plus H2O. Now you need to balance it. तो 2C यहाँ पे लगा देंगे और H3 यहाँ पे लगा देंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ हो गया 3 and 4 7। तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पे 3 by कितना कर दे इसको? How much to make it? 3 कर देते हैं यहाँ पे, 6 और 1 7 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा क्लास। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉम्बशन, सेकंड है डिहाइड्रेशन। सेकंड रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। क्यों बोलेंगे डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है बताइए? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, टेल मी। Loss of Removal water. of water. Removal of Removal of water in presence of what? H2SO4. H2SO4. SO4. We can write Concentrated H2SO4. H5OH. Conc H2SO4. So what we are getting on heating? What we are getting? We are getting C2H4 plus H2O. We are getting. This is dehydration. थर्ड क्या था? थर्ड क्या था? कोई बताएगा? Anyone please tell me what was the third one? बताओ। Oxidation. चलो हम लोग लाइन से लिखते हैं। एस्टेरिफिकेशन। क्या था? एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या हो रहा था? What was happening in esterification? Alcohol, Carboxylic acid was reacting carboxylic with alcohol. acid combines with alcohol. CH3COOH was reacting with C2H5OH. So we were removing OH and H from this, and then in presence of what? In presence of conc H2SO4 on heating, what do we get? We get CH3 COO C2H5 plus what? H2O. ठीक है। तो कंबशन, डिहाइड्रेशन, एस्टेरिफिकेशन, और फोर्थ क्या था? फोर्थ था क्या था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग इन ऑक्सीडेशन? C2H5OH in presence of what? Nascent oxygen, KMNO4. What we were getting? What we were getting? CH3 COOH plus what? H2O. H2O. जो कल नोट नहीं किए थे ऐसे नोट कर लो. It will be easy for you to learn.
And the last one was what? Reaction with sodium. तो रिएक्शन विद सोडियम में क्या हो रहा था? C2H5OH plus Na. What we were getting? We were getting C2H5ONa plus what? Plus H2. कट रहा है, बोलते भी नहीं हो आप लोग कुछ भी नहीं कि मैम कट रहा है. ठीक है? So what we have got? What different types of reaction? All of you have noted? Everyone has noted? Yes, ma'am. So what different property you have got? You have got CDEOS. क्या मिला है? क्या मिला है बताओ? What do you have got? Ma'am, CDEOS. So what is this CDEOS? This is a way to learn the chemical properties. C means combustion, dehydration, esterification, oxidation and sodium metal. ठीक है? इसमें क्या मिल रहा है आपको? इसमें CO2 मिल रहा है. डिहाइड्रेशन में क्या मिल रहा है? C2H4 मिल रहा है. एस्टरिफिकेशन में क्या मिल रहा है आपको? ईस्टर मिल रहा है. ऑक्सीडेशन में क्या मिल रहा है? एसिड मिल रहा है. CH3COOH मिल रहा है. और सोडियम मेटल में C2H5ONa मिल रहा है. Is it or not? Is it? Yes, ma'am. The way that you will learn the answer, this way you can learn the properties very well. It will be easy for you to learn. Have you noted? जब भी मैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज बोलूंगी तो आप क्या बोलेंगे? किस चीज को याद रखेंगे? CDEOS. 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 कंबशन क्या देगा? अल्टीमेट प्रोडक्ट उसका क्या रहेगा? CO2 plus H2O. कार्बन प्लस H2O. डिहाइड्रेशन, अगर इथेनॉल में से डिहाइड्रेशन हो रहा है और अगर वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा तब बचेगा क्या? इट विल बी लेफ्ट विथ nobody is responding. What it will be left with? Here only the in your blackboard it is written ना. अगर यहाँ से OH और एक H निकल जाता है, एक OH और इसमें से एक H निकलता है तो बचता क्या है? C2H4 ना. क्या बचेगा? Ma'am, C2H4. Learn the trick technique. You are not going to mug up anything. Don't need to mug up. Just understand the thing. Dehydration means removal of water. Dehydration means what? Removal of water. Removal of water molecules. Who is responsible for the removal of water? Concentrated H2SO4. So concentrated H2S4 is acting as like what? Catalyst. Catalyst. Here it is not being as a catalyst. What is being used as? Dehydrating agent. Yes, dehydrating agent. it is a Ma'am, dehydrating dehydrating agent. which is acting like, which is forcing or trying to remove water molecule from where? From ethanol. Okay, which is responsible for the removal of water molecule from this substance C2H5OH. जहां पर भी concentrated H2SO4 रिएक्शन में नहीं बल्कि एज एन एजेंट यूज कर रहा है तो अल्टीमेट उसका फंक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कंपाउंड. You can see here in the esterification reaction also concentrated H2SO4 is used now. So what it is doing? It is removing water molecule. It is removing. It is not being used up in the reaction. It is used as an agent. Any confusion to anyone? Is there any confusion, class? See, all these No, ma'am. all these topic is not going to come into your exam, but it will be beneficial if you understand it for your future class 11, if you are interested in science. ठीक है? Yes, ma'am. वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है? ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है.
और आई होप दैट यू नाउ टिल नाउ एस्टरिफिकेशन आप रिएक्शन समझ गए होंगे. आज मैं कुछ बनवाऊंगी भी आप लोग से. होमवर्क आपने बनाया या नहीं? हैव यू सीन गॉन थ्रू द असाइनमेंट इन स्नैप? You don't have the habit, na? Don't have the habit of checking it. Now, oxidation में क्या हो रहा है? What will happen in oxidation? What's going to happen? What is happening here? Alkaline KMnO4 is being used. तो अल्कलाइन KMnO4 क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. किसको? इथेनॉल को. तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा. ठीक है. क्या बनेगा? CH3COOH will be formed. Okay, write down one reaction. Write down one reaction. Yesterday I have given you one. Methyl Yes, ma'am. alcohol reacts with ethanoic acid. All of you have done? Has everyone done? If you haven't done, do it. Aman. What do you have written, Aman? You have written ethanol. You have taken ethanol. I have said methanol. Whatever you have made is correct, but the question what I have given, you have not followed that question. Do it again. Okay, Aarti wants to show. Wait a minute, Aarti. Where is Aarti? Yes, Aarti. Rishi Dubey, I'm waiting for you. Yeah, correct, Aarti. Correct. Correct. And name also, whatever you have written, IUPAC name is correct. Wow. Priya. Yes, correct. Priya also correct. Correct. Done, Aryan. Okay. Wait a minute. Let's see. Ishu Dubey, how much time you are taking? Now it's correct. Now it's correct, but you are leaving the things. आप लोग सभी जो है एक मिस्टेक कर रहे हैं. आप लोग एरो के ऊपर कॉन्क H2SO4 और हीटिंग का साइन नहीं दे रहे हैं. So give it. Rest is okay, Aryan. Also write down the IUPAC name. Yes, Abhijit. Abhijit. या करेक्ट अभिजीत, करेक्ट. ठीक है, अभिजीत का सही है. कौन है? सान्या, डू यू वांट टू शो? श्वेता. श्वेता. Shweta. Okay, Shweta, correct. Now I will discuss it on the blackboard. Okay, thank you all of you. But कुछ लोग नहीं बना रहे हैं, और आप अगर क्लास वर्क नहीं कर रहे हैं, then you are doing not the good thing. If you are not doing the class work. Wait a minute. So what was my question? My question was, CH3COOH plus CH3OH. ठीक है, ये है एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड. दिस इज मिथेनॉल in presence of what? Conc H2SO4. On heating, what we are going to get? We will get CH3COO, CH3 plus what? H2O. इसका नाम क्या है? मिथाइल इथानोएट. मिथाइल इथानोएट is the name. ओके, ठीक है. एक और क्वेश्चन मैं आपको आज फिर से दे रही हूँ. राइट ऑन द क्वेश्चन. रिएक्शन बिटवीन प्रोपानोइक एसिड एंड इथेनॉल in presence of conc H2SO4. Note down the question.
Reaction between propanoic acid and ethanol. All of you have written? Yes, ma'am. We want to do it now or you will do it as a homework? Ma'am, ethanol. हाँ, ethanol, propanoic acid and ethanol. Question है propanoic acid प्लस क्या है? प्लस है इथेनॉल in presence of conc H2SO4 on heating. This is the question. आप कर लेंगे घर पे होमवर्क? अब हेडिंग दो, राइट डाउन द हेडिंग, गिव द हेडिंग टेस्ट फॉर एन अल्कोहल. टेस्ट फॉर एन अल्कोहल. फर्स्ट लिखो सोडियम मेटल टेस्ट. सोडियम मेटल टेस्ट. ठीक है, सोडियम मेटल टेस्ट. देखो, add a piece of sodium metal. What is this sodium metal test? Add a piece of sodium metal to the liquid in a dry test tube. If the gas evolved produces pop sound, then it is ethanol. Second, ester test. The organic compound when warmed with ethanoic acid with few drops of concentrated H2SO4,